Okay. Those who have questions, you can kindly ask the questions. We would feel really uh, happy to answer the questions. Is there anyone who has a question with regard to this particular topic? Sir, I do have one question. Could you kindly introduce yourself, ma'am? Like your name, Yes, sir. your So this is, designation, yeah, with yes. school and Sir, this place. is Gayatri Gowde. I'm from Pune. I am a primary teacher. I Okay. teach grades 1, 2, and 3. Uh, the like since we're talking about Bloom's taxonomy, so Ma'am, can from you grade be third please onwards. be louder? You are not louder. Yeah. Am I clear now? Yeah, now you're clear. Yes. Yeah. Uh, from grade 3 onwards, I believe it is much more easily applicable since there are new subjects like science and social studies and everything. But then isn't it little tricky for grade 1 and 2? Like what are the other, places where we can apply? Because usually it's like activity and playway method for little children. No, even So in playway method, we are assessing the application and analyzing capacities of the students, right, aren't we? right, right, So, right from the level of nursery itself, Bloom's taxonomy is applicable. We right, have to right. closely Of course. observe each and every activity, and we have to Correct, connect it with correct, the cognitive level. correct, correct. Right. Absolutely. All right. Thank you, sir. Anything else, ma'am? Excuse me, sir. Yes, sir. Kindly introduce yourself. Regarding Bloom's taxonomy, some of the words are common in different levels of Bloom's taxonomy. Yes. Sometimes it causes confusion while giving the questions in the your, tests and exams. How to The overcome teacher this? should be, yeah, the teacher should be particular about the outcome, sir. So, what is the outcome that you want from the child at that particular level? And then you have to frame your question using that particular verb. That's it. So, first of all, you have to understand every verb very clearly. So, what I generally suggest my teachers who work with me is that, like, you make frame at least one question for each verb and try to understand so that you can apply it in your. And Bloom's taxonomy should be used in everyday class. The more you use Bloom's taxonomy, you will come out of that confusion, and you will be a pro actually in framing the questions. The people who frame good questions, they might have used Bloom's taxonomy in a wonderful way. Okay, so every day when you before you go to the class, just try to frame questions from each level using the verbs which are given, sir. So slowly you will come out of this like it's only practice, sir. Like teaching is practice, as you know. It's only practice that gives you, like confidence. Thank you, sir. Yeah. Good evening, sir. I'm Geeta Nair. I'm a language teacher. मैं हिंदी पढ़ाती हूँ. तो मुझे दिक्कत होती है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है या फिर अप्लाइंग है या एनालिसिस है या तो वो उसमें मुझे क्वेश्चंस फ्रेम करने में जैसे सर बोल रहे थे क्वेश्चन फ्रेम करने में दिक्कत होती है. उसको मैं कैसे करूँ? जैसे ग्रामर है, जो 9th और 10th के सिलेबस के हिसाब से जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ तो कई बार एनालाइज नहीं आ पाता, कई बार अप्लाइंग नहीं कर पाती, मैं कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता. तो उसके लिए मैं क्या करूँ सर? देखिए मैडम, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली ये है कि आप लिटरेचर भी पढ़ाती हो, और दूसरी ये है कि आप बच्चों को ग्रामर भी पढ़ाती हो। और ये दोनों ये दोनों की जो स्किल है ना, वो अलग है। लिटरेचर की, जो भी लिटरेचर पार्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, स्पेशली लिटरेचर जब हम पढ़ाते हैं, चार स्किल्स जो है LSRW लैंग्वेज में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यहाँ पे एप्लीकेबल राइट होती सर. है। जब हम ग्रामर के हिसाब से सोचते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट, अगर आप नाउन की कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाए हो, क्रिया, आप क्रिया पढ़ाए बच्चों को, अब क्रिया को किस कहाँ तक द चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड। ओके, चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग क्रिया में, क्रिया की जो कॉन्सेप्ट है, कितने अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आया, ये है पहला स्टेप का। दूसरा स्टेप ये है कि बच्चे, जो क्रिया की कॉन्सेप्ट है, बच्चे अपने आप अपने शब्दों में दूसरों को
कहने की उनको वो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए बच्चों में। उसके बाद वो जो क्रिया की कॉन्सेप्ट है बच्चे अप्लाई करनी चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन में। ठीक है मैम। तो जब क्लास बढ़ती जाती है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ग्रामर की इंक्रीज होती जाती है। इन इंग्लिश में भी जब वी हैव नाउन्स एंड प्रोनाउंस, क्लास बढ़ते हुए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स भी देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी देखते हैं, है कि नहीं? तो ग्रामर जैसे कॉन्सेप्ट्स में आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को लेके आप ज्यादा पर्टिकुलर मत हो जाइए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। आपको आप अप्लाइंग तक देखिए ग्रामर जैसी, ओके ओके। हाँ क्योंकि सर, हिंदी। हाँ सर, इसी में दिक्कत आ रही है क्योंकि 9th और 10th में सिलेबस हमारा पैक्ड है। उसमें हमको 16 मार्क्स का ग्रामर देना है, तो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ही दे सकते हैं। वहाँ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज वो नॉलेज और अप्लाइंग सब हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो हम देखिए बाउंडेशन हो जाता है। एक बात मैं कह सकता हूँ कि सीबीएसई टीचर होने के नाते ग्रामर की आवश्यकता तो बहुत है, व्याकरण तो आनी चाहिए बच्चों को, पहली बात ये है। लेकिन सीबीएसई सिलेबस में ज्यादातर एम्फसिस जो है वो लिटरेचर पार्ट में है, क्योंकि ज्यादातर हिंदी कोर्स भी लेते हैं बच्चे, है कि नहीं? तो कोर्स भी में लिटरेचर को इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो हम जो जहां पे इम्पोर्टेंस ज्यादा है वहां पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को 100% अप्लाई करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट 16 मार्क्स की ग्रामर है, तो वो ग्रामर की तरीके से ही पूछ रहे हैं। ग्रामर में आपको एप्लीकेशन लेवल, इवैल्यूएशन लेवल क्वेश्चंस तो सीबीएसई एग्जाम्स में पूछेंगे ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे ग्रामर में, है कि नहीं? तो एप्लीकेशन लेवल तक आप वहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यस यस सर, यही मैं पूछ रही थी क्योंकि वो हाँ। 6 जो आप पिरामिड बता रहे थे ना, वो हम्म। सारा होल क्वेश्चन पेपर में उसको लाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, ग्रामर में तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ग्रामर एप्लीकेशन तक ही जाती है, ग्रामर या यस वोकैबुलरी यस। एप्लीकेशन तक ही या जाती है। आप जब लिटरेचर पढ़ाते हो, लिटरेचर में क्या होता है, हर लेसन में एक वैल्यू होती है, हर लेसन में वोकैबुलरी होती है। हम वोकैबुलरी भी बच्चों को सिखानी चाहिए। जो शब्द है वो हर रोज बात करने में, अपने वार्तालाप में बच्चे कैसे उस शब्द की उपयोग करेंगे, ये सब भी बच्चों को हमें सिखाना पड़ती है। तो लिटरेचर में आप 100% ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज कीजिए। और ग्रामर जैसे जो ज्यादा एम्फोसिस जहां पे नहीं है वहां आप एप्लीकेशन तक देखिए, बस उतना। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? Is there anyone else who would like to ask a question? Yeah. So if at all we don't have any questions, I would like to request a few people to come forward as to give a feedback for this particular session, as in how you felt about the session. Good evening, sir. This is Sita Lakshmi from Chennai Public School. I teach computer science for grades 1, 2, and 3. The session was extremely insightful, sir, and very, very informative. I have noted down some major key points. I wanted to really ask you if any documentations are available for the session, which we can take it as a takeaway from the session in order to refer every day and apply it in our respective classrooms. Ma'am, you can, rather than documentation, what I suggest is on Google, this pyramid, Bloom's taxonomy pyramid is very much available. You search for a pyramid which has even verbs also. They are just, if you type Bloom's taxonomy pyramid with verbs, you will get the pyramid. You can download it. You can take a printout of it and you can stick it in your lesson plan or any book which you refer Okay. on daily basis. Or if at all you are maintaining a training notes, in that as well, you can stick this picture. Just, Okay. always picturization helps us rather than reading Definitely. documents. If you have a picture and looking at a picture, if you can draw inspiration, that is more better. So you can download Definitely. that picture, paste it in your lesson plan or any book which you prefer referring daily, and you can use that in that way. Thank you very And much, sir. use the questions on daily basis in classroom Yeah, for sure. every Thank you subject. very much, sir.
Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good evening, Anyone sir. else? Yes, ma'am. Good evening, sir. I'm Asha Sagar from Yes. Oxford Grammar School in Hyderabad. I teach English and social. This session has been very enlightened one, because we through this Bloom's taxonomy application, we can feel the nerves of the children and we can work for their holistic development. So it was really very, very good session. So we want you. such type of session for our future course of time also. And please provide us with a model of lesson plan for every subject so that we can put into our daily teaching transaction. Sure, ma'am. We will definitely try for it. Thank you so much. Thank you, sir. Yes. Anyone else? Okay. So that was all about today's session. Thank you so much, dear teachers, who all have joined and who were there from the starting of the session till the ending. And if at all you people want a certificate, then you need to pay 21 rupees, to Matthew, sir. Sir will be sharing the link for the certificate. So you don't have to worry. Those who want the certificate, you have to use that link as to download the certificate. Everything will be explained detailedly with details, every small details in that link. Thank you so much. And see you all again. Hope so we will have few more sessions like this. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you.